Hello everyone, how are you all? I hope you are all fine. So we are back on your favorite learning platform, Learn Forward, and we will study from Pitara. This is chapter number 18th, addition. So addition करना क्या होता है? मतलब प्लस करना, ऐड करना, किसी चीज में कुछ जोड़ना. So whenever we add 2 plus 1, जैसे हम 2 में 1 ऐड करते हैं तो क्या नंबर बनता है? 1, 2, 3. So 2 plus 1 is 3. ऐड करना क्या करा? हमने 2 में 1 नंबर और जोड़ दिया. सो एडिशन में हम क्या करते हैं? नंबर्स को साथ में काउंट करते हैं और इकट्ठे जो उनका सम आता है, जो एडिशन करके नंबर्स का आंसर आता है, दैट इज कॉल्ड अ सम. सो जॉइन द फिश रॉड्स टू द करेक्ट फिश. अब हम क्या करेंगे? नंबर्स को ऐड करेंगे और जिस फिश पे वो नंबर का आंसर है वी विल जॉइन इट. 5 plus 1. So let's add on fingers first. 5 plus 1. So this is 5, this is 1. So 1, 2, 3, 4, 5 and plus 1, 6. So 6. We will have to find the fish which have 6 numbers. So here is the fish. Let's join it. Now 4 plus 6. 6 plus 4 क्या होता है? Let's add. So let's put lines here. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 1, 2, 3, 4. You can also do your addition like this. So we will now count the lines. अब total lines को count करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 6 plus 4 is 10. जब हम 6 में 4 numbers add करते हैं, what it becomes? 10. So let's find the fish which have 10. So here is the fish. Let's join it. Now 4 plus 3. So 4, 1, 2, 3, 4 and 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 4 plus 3 is 7. So here is the fish that has 7 number. We will join this. Now 3 plus 2. 3 plus 2. 1, 2, 3, 4, 5. So let's find the fish which have 5. Here is the fish. अब इसको क्या करेंगे? इससे join कर देंगे. Now 5 plus 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Let's count it. Let's add now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 5 plus 4 क्या होता है? 9. Now match it. Match this with. Now 7 plus 8. 7 plus 8 count करेंगे. 7 plus 1, sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 1. So let's count it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and plus 1, 8. So 7 plus 1 क्या होता है? 8. We will now match it with the 8. So ऐसे ही आपको ऐड करना है और जिस फिश के ऊपर वो नंबर है उसके साथ मैच करना है. Now, who lives in the houses, join them with the line and take them home. So यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं जिसको प्लस करके उनके जो होम है उसके ऊपर नंबर वो वाला लिखा है. So let's count. 4 plus 4. So what is 4 plus 4? Let's count it here. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 4 plus 4 is 8. Let's find which house has 8. So this house has 8. Let's match it with this. So 4 plus 4 8 होता है, तो इसलिए हमने क्या करा? इस टर्टल को इसके होम से मैच कर दिया जिसके ऊपर 8 नंबर था. Now 5 plus 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. So let's add now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 5 plus 4 is 9. So we will find the 9. So 9 is here. Let's match it with this. Now 5 plus 5. So 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 5 plus 5 is 10. So we will match with this. Now you can do these three by yourself. It's very easy. Let's do next exercise. Add down. So this is same. We will put the marks here. 3 plus 2. 1, 2, 3 and 1, 2. We will draw the lines. हम जितना नंबर होगा उसके आगे उतनी lines draw करेंगे. So let's add now. 1, 2, 3, 4, 5. So 3 plus 2 is 5. Now 4 plus 5. 1, 2, 3, 4. 4 lines. Now 5. 1, 2, 3, 4, 5. अब इसको ऐड करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
So 4 plus 5 is 9. Now you can do these sums like this only. Next, add down, this is same, 6 plus 1. So let's put 6 lines, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 1 line here. Let's add it, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 6 plus 1 is 7. Now 5 plus 2, 1, 2, 3, 4, 5 and 1, 2. Let's count it all together. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 5 plus 2 is 7 again. Then 6 plus 3. Let's put 6 lines. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 6 plus 3 is 9. Now 5 plus 4. 1, 2, 3, 4, 5 and 1, 2, 3, 4. Let's count all together. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 5 plus 4 is 9. So इसी तरीके से आपको ये वाले sums भी सारे करने हैं. I hope it is clear. Let's do next. 2 plus 1. So इसमें भी आप you can put lines or you can add like this. So 2 plus 1, that is again 1, 2 and 1. 1, 2, 3. So 2 plus 1 is 3. Answer is 3. So 3 plus 1, 1, 2, 3 and 1. So let's count all together. 1, 2, 3, 4. So 3 plus 1 is 4. Now 2 plus 3. 2 lines and 3 lines. Count together. 1, 2, 3, 4, 5. So 2 plus 3 is 5. 5 plus 3. 5 lines here. 3 lines here. 1, 2, 3, 4, 5 and 3 lines here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 5 plus 3 is 8. Now 6 plus 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 plus 1. Let's count them together. 1, 2, 3, 4, 5, 6 plus 1, 7. So 6 plus 1 is 7. So this is how you have to do all the sums. Now 2 plus 2. So same. 2 lines here, 2 lines here. 1, 2, 3, 4. So 2 plus 2 is 4. Now 3 plus 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Let's count together. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 3 plus 4 is 7. Now 4 plus 5. 4 lines here. 1, 2, 3, 4 and 5 here. 1, 2, 3, 4, 5. Let's count together. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5 plus 4 is 9. 6 plus 2. 6 lines. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 2 lines. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So total is 8. So you can do all these sums like this only. Now we have to circle the correct number. जो भी इसका आंसर होगा उसको हमने circle करना है. There are 3 options given under the question. So what is 4 plus 6? So 4, 1, 2, 3, 4 and 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 10 is the answer. 8, 9, 10. So this is the answer. Now 3 plus 7. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So let's count them together. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 10 is the answer. Now 3 plus 5. So there is one more method by which you can do the sum. कि आपको एक नंबर के बाद जो बड़ा नंबर है उसके बाद छोटे नंबर को काउंट करना उतने टाइम्स. लाइक if you have 5 number you have to count 3 more. 5 के बाद क्या आता है 6, then 7, then comes 8. So the answer is 8. आप किसी भी तरीके से कर सकते हो. For example like this only 4 plus 5 है. अगर 5 आपके पास बड़ा नंबर है, छोटा नंबर count 4 more numbers. 5 के बाद आता है 6, then 7, then 8, then 9. So 5 plus 4 होता है 9. 9 plus 1. 9 के बाद एक नंबर और काउंट करेंगे. After 9, 9 plus 1 is 10. So 10 is the answer. 5 plus 5. अब 5 के बाद 5 numbers और काउंट करेंगे. 6, 7, 8, 9, 10. So 10 is the answer again. Now 6 plus 3. अब 6 is the big number, 3 is small. So 6 के बाद 3 numbers और काउंट करेंगे. 6 के बाद आता है 7, then 8, then comes 9. So 9 is the answer. 8 plus 2. 8 के बाद 2 numbers और काउंट करेंगे. 8 के बाद आता है 9, then comes 10. So 10 is the answer. Now 4 plus 4. 4 के बाद 4 numbers और काउंट करेंगे.
After comes 4, 5, 6, 7, 8. So 4 plus 4 is 8. Now 6 plus 2, 6 के बाद 2 numbers और 6 के बाद 7 and 8. So this is the two methods by which you can do the addition. Now you can do all these sums by yourself. Same method 4 plus 6. So what is 4 plus 6? 6 के बाद 4 numbers और count करेंगे. 7, 8, 9, 10. So 6 plus 4 is 10. 3 plus 8. After 8 we will count 3 more. 9, 10, 11. So 8 के बाद 3 numbers count करते तो 11 बनता है. 7 plus 4. We will add 4 numbers to 7. 8, 9, 10, 11. 6 के बाद 6 और काउंट करेंगे. So 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12. So 6 plus 6 is 12. 8 plus 4. 8 के बाद 4 numbers और करेंगे. 9, 10, 11, 12. ऐसे 6 के बाद 5 और काउंट करेंगे. ठीक है. 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11. 5 के बाद 4 और 6, 7, 8, 9. नाउ 9 के बाद 5 और काउंट करने हैं. 9 प्लस 5 है ना, तो 9 पहले 9 के बाद 5 और काउंट करेंगे. 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14. So 14 is the answer. Now 7 plus 3. 7 के बाद we will count 3 numbers more. 7 के बाद 8, 9, 10. So answer is 10. Now 3 के बाद 6 ना 6 के बाद 3 करेंगे क्योंकि हम हमेशा बड़ा नंबर जो है उसके बाद काउंटिंग स्टार्ट करते हैं. 6 के बाद 3. 6 के बाद 7, 8 and 9. So answer is 9. अब 5 plus 8. 8 के बाद 5 numbers और काउंट करेंगे. 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13. So answer is 13. Now 8 plus 5. 8 के बाद 5 और 6, 7, 8, 9. Sorry, 8 के बाद 5, 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13. So answer is 1, 3, 13. So these sums you can do it yourself. They are very easy. I hope the concept is clear of addition. Now we have to circle the correct answer here. 7 plus 8, जो आंसर सही होगा उसे सर्कल करेंगे. अब 8 के बाद 7 numbers काउंट करते हैं. Let's go. 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So answer is 15. 8 के बाद 6. So 6. 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14. So answer is 14. Let's circle it. Now 5 plus 3. 5 के बाद 3 numbers और काउंट करेंगे. 5 के बाद 6, 7, 8. Answer is 8. Now 9 plus 6. अब 9 के बाद 6 numbers और काउंट करने हैं. 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15. Answer is 15. Now 6 plus 4. 6 के बाद 4 numbers और काउंट करेंगे. So ये 4 होते हैं. 6 के बाद 7, 8, 9, 10. So answer is 10. Let's do one more. 6 plus 5. 6 के बाद 5 और काउंट करेंगे. 6 के बाद it is 7, 8, 9, 10, 11. Answer is 1, 1, 11. So this is how you have to do all the sums. I hope it is clear. You can do all these sums yourself. Same pattern 4 plus 5. Even you can put the marks or you can do it on fingers. आप marks भी डाल सकते हो और fingers से भी add कर सकते हो. Let's add this 4 plus 5. So 4 के अंदर 5 add करने मतलब 5 के बाद 4 और काउंट करेंगे. बड़े नंबर के बाद छोटे और. 5 के बाद 6, 7, 8, 9. The answer is 9. 6 plus 4. 6 के बाद 4 numbers और काउंट करने हैं. So 7, 8, 9, 10. Answer is 10. 8 plus 7. So 8 के बाद 7 numbers और काउंट करेंगे. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. हमने 7 numbers खोल लिए. अब 8 के बाद काउंटिंग स्टार्ट करेंगे. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Answer is 1, 5, 15. 7 plus 7. We will start counting 7 more numbers after 7. 7 के बाद 7 और numbers count करेंगे. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Answer is 1, 4, 14. 6 plus 7. Same way 6 के अंदर 7 add करेंगे. So 6 के बाद 7 numbers count करेंगे. 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Answer is 1, 3, 13. Now 5 plus 6. 6 के बाद 5 numbers और count करेंगे. 7, 8, 9, 10, 11. 1, 1,
11. So these are the sums which are like this only. So you can do it yourself. They are very easy. Now these are same as this. So we will do 5 more sums here. 5 plus 5. 5 के बाद 5 numbers और count करते हैं. 6, 7, 8, 9, 10. 5 plus 5 is 10. 6 plus 4. 6 के बाद 4 और count करेंगे. 7, 8, 9, 10. Answer is 10 again. 8 के बाद 7. 8 plus 7. So 8 के बाद 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Answer is 1, 5, 15. 9 plus 3. 9 में 3 ऐड करेंगे. 9 के बाद 10, 11, 12. 1, 2, 12 is the answer. Now 8 plus 3. 8 में 3 ऐड करना है. So let's count after 8, 9, 10, 11. So answer is 1, 1, 11. So we have done the 5 sums here. You can do rest of them by yourself later. Now let's do this add across. अब पहले हम क्या कर रहे थे? 2 numbers ऐड कर रहे थे. अब क्या करेंगे? 3 numbers ऐड करेंगे. तो पहले 2 करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें 3rd नंबर को ऐड कर देंगे. ठीक है. So let's make a sum here. 1, 2, 1. अब हमें इन तीनों नंबर्स को ऐड करना है. ओके. पहले 2, 1, 2 plus 1 plus 1. ठीक है. अब 1 के बाद 2 और काउंट करने हैं. 1 के बाद क्या आता है? 2, 3. फिर उसके बाद एक और काउंट करेंगे. +1, 4. सो आंसर इज 4. सो नाउ 2 + 2 + 3. पहले 2 और 2 करेंगे. 2 और 2 कितने होते हैं? 2 + 2 1, 2, 3, 4. 2 + 2 4 हो गए. 4 + 3 5, 6, 7. तो आंसर आ गया 7. नाउ 2 + 4 + 1. पहले ये 2 करेंगे, फिर ये 2 करेंगे. 2 + 4. 4 में 2 ऐड करो. 4 के बाद 2, 5, 6. 6 + 1. 6 + 1, 7. So answer is 7. Now 3 + 4. पहले करेंगे 3 + 4. 4 में 3 ऐड करेंगे तो क्या आता है? 5, 6, 7. 7 आ गया. Now 7 + 2. 7, 8, 9. तो answer is 9. Now 3, 3, 3. Let's 3 + 3. 3 में अगर 3 ऐड करते हैं तो क्या आता है? 3 के बाद आता है 4, 5, 6. So answer इन दोनों का 6. 6 + 3, 7, 8, 9. Answer is 9. Now 6 + 4 + 3. If you are finding it difficult to do it on fingers, you can do it with the lines. Let's do this ones with lines. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Now we will count them all together. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So answer is 1, 3, 13. Now 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Let's count them. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So answer is also 1, 3, 13. अब ये फिंगर्स पे करते हैं एक बार. 9, 4, 4. 9 के बाद 4 और काउंट करते हैं. 10, 11, 12, 13. सो यहाँ तक 13 आ गया. अब 4 और काउंट करेंगे. सो 13 के बाद 14, 15, 16, 17. आंसर इज 1, 7, 17. Now 2, 4, 7. 2 + 4. पहले 4 + 2 + 4 करेंगे. 4 के बाद 2 और काउंट. 5, 6. अब 6 आंसर आ गया. उसमें 7 ऐड करेंगे. 6 के बाद 7 और काउंट. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 3, 13 is the answer. So I hope the concept is clear. पहले हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे. जो आंसर आएगा उसमें इस वाले को ऐड कर देंगे. तो हमारा तीनों को ऐड करके आंसर हमें मिल जाएगा. Now you can do all these by yourself. They are very easy. So let's do the next exercise. These are same. You can do it as your homework. I hope I don't have to do. So we have completed the chapter. If you have any problem, you can watch the video again. I hope the concept of fingers and lines is clear. आपको क्या करना होता है? बस बड़े नंबर के बाद जितना नंबर है उसको फिंगर्स पे काउंट करना होता है. So और लाइन्स में आप क्या करते हो? You can draw the lines and then count them all together. So these are the 2 methods of addition. I hope everything is clear. Thank you so much. Happy learning.